अगर वो आपसे पूछते हैं ड्राफ्ट अ मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, आप पहले समझ लीजिएगा, it is a kind of one of the mortgages. It is a kind of one of the mortgages. Mortgages are of various kind. Simple mortgage, mortgage by deposit of title deeds, usufructory mortgage, English mortgage, anonymous mortgage. मगर एक वो mortgage होता है जो आपने अक्सर सुना है, mortgage by deposit of title deed. English law में इसको क्या कहते हैं? Equitable mortgage. इसको equitable mortgage. ये कौन सा mortgage होता है? पहले मॉर्गेज होता क्या है? मैंने आपको कंसेप्ट शायद बताया होगा कि नहीं बताया. मॉर्गेज इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसफर postulated under the Transfer of Property Act. बिल्कुल उसको recognition दिया. What is a mortgage? As per the definition of mortgage under the Transfer of Property Act says, when one person obtains certain loan, am I with you? Or finance facility, am I with you? In lieu of का मतलब एवज, in lieu of surrendering or keeping the security of his immovable property. Immovable आती नहीं है, ये याद रखना, movable कभी नहीं आता in respect of his immovable property. Am I with you? Then under such circumstances, a relationship between the mortgager and the mortgagee takes place. Am I with you? With the condition that the mortgager shall repay the amount of finance facility or loan on the time fixed in the mortgage agreement along with the interest of markup, and in case he fails to repay this particular amount, the mortgagee shall be entitled to put the property in auction, am I with you, or exercise the right of foreclosure as per the requirements or terms and conditions of the mortgage. कुछ समझ में आया कि नहीं आया? It is a sort of a security. The person who obtains the loan is known as mortgagor. Am I with you? The person from whom the amount is taken is known as mortgagee. The property, am I with you, which is kept at security. कौन सी property, sir? कौन सी property? Immovable, which is kept, is known as mortgage property. Am I with you? And the document on the basis of which this transaction takes place is known as mortgage deed. Am I with you? आज्ञा मेरे बच्चों. अब it is one of the kinds of mortgages. अब ये सुनिएगा बेटा, no interaction. Memorandum of deposit of title deeds. ये कौन सा mortgage है? ये वो मोस्ट कॉमन mortgage होता है जब बंदा लोन लेता है बैंक से. अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा, फाइनेंस फैसिलिटी बैंकिंग लॉ पढ़ा होगा कि वो अपने कागजात प्रॉपर्टी के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिरवी रखवाता है. एम आई विथ यू? फैक्ट्री के गिरवी रखवाता है. एम आई विथ यू? इंडस्ट्री के गिरवी रखवाता है. एम आई विथ यू? मशीनरी के जो कागजात होते हैं, हैवी मशीनरीज फिक्स्ड होते हैं प्रॉपर्टीज में, वो गिरवी रखवाता है. मगर इट इज नोन एज इक्विटेबल मॉर्गेज अंडर द इंग्लिश लॉ. मगर कानून क्या कहता है? व्हाट आर द कंडीशन? कि आप अगर फाइनेंस फैसिलिटी लेते हैं तो आपका पहले वो देखिएगा कि भाई काफी साहब के लिए अगर 5 करोड़ के ले रहे हैं तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी मेरे पास रखा, ये ओपन प्लॉट है उनका साइट एरिया में. एम आई विथ यू? इनकी बिल्डिंग है. एम आई विथ यू? इनका कोई डिफेंस में घर है. तो क्या ये 5 करोड़ से ऊपर का है कि नहीं है? तो वो पहले स्क्रूटनी करता है मॉर्गेजी. एम आई विथ यू? वो पार्टी. और अगर वो समझते हैं कि नहीं इसकी मार्केट वैल्यू सर इतनी होगी, अल्लाह ना करे कादिर साहब पे ना कर सके, तो हम इनकी ये प्रॉपर्टीज पे हाथ रख के प्रॉपर्टीज को बिकवाएंगे. कौन सा राइट एक्सरसाइज करता है मॉर्गेजी इन दिस केस? ही एक्सरसाइजेज द राइट ऑफ ऑक्शन सेल. ये याद रखना. एंड देयर इज नो पर्टिकुलर सेट पैटर्न ऑफ ड्राफ्टिंग अ मॉर्गेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और इक्विटल मॉर्गेज. आप कोई भी फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, मगर आपको उसके जो मैंने डेफिनेशंस बताए हैं, रिक्वायरमेंट्स बताई है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, वो आपको उसमें मेंशन करना है कि सर कब आपने फैसिलिटी ली, क्यों ली. एम आई विथ यू? आपको बताना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटअप है, आपको ये बताना है ये मेरी प्रॉपर्टीज मेरे नाम की है. एम आई विथ यू? आपको बताना है सर आप मुझे दें और ये प्रॉपर्टी को मेरी जो वैल्यूबल है इंश्योर भी करवाएं. कल के कोई आग लग जाए तो वो राइट हो कुछ हो तो सर मेरी प्रॉपर्टी को इंश्योर भी करवाएं. मॉर्गेज इज नथिंग बट द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओनरशिप तो मॉर्गेजर की है फॉर द till the mortgage is retrieved or taken back. Am I with you? Redemption, right of redemption. Clear हो गई बात?
Am I with you? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? It is a relationship which is created between the debtor and the creditor. Am I with you? Mortgager कौन है? Debtor है. Mortgagee कौन है? Creditor है. मेरे बच्चे आया कुछ समझ के अंदर? So a mortgage is nothing but a recognized mode of transfer. Recognized mode of transfer. अगर इसमें mortgage breach करता है तो mortgagee has a twofold rights, either of auction sale or sell the property, reimburse himself from the sale proceeds and satisfy the outstanding claim of the mortgager. Am I with you? But in case Kadir Sahab as a mortgager is ready and willing to repay you और आप गोल मोल कर रहे हैं और आप मेरी प्रॉपर्टी रिलीज नहीं कर रहे और आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं contrary to the contract, I has a right to sue you for recovery by way of exercising the right of redemption. Am I with you? The right of the mortgager, which is absolute right as per the section 60 of the Transfer of Property Act. याद रखना. The right of redemption is a statutory right. It cannot be bartered away. It cannot be given away. Am I with you? Unless and until subject to the consent of both the parties. Am I with you? मैंने mortgage दिया फिर मैं कहता हूँ mortgagee मैं बेच रहा हूँ ये property. ये लड़की खरीद रही लड़का खरीद रहा है. Am I with you? वो कहते हैं सही है काले साहब आप उसको बेचें. Now the purchaser will be stepping in my shoes. Am I with you? And he will be repaying it to you. And if you do not give back the property, then the purchaser, subsequent mortgagee, shall have a right to redeem the property against you. Clear? Clear?